If you want to take it slow, hop up on my jet and roll to Tokyo. From Kala Chashma to Chikni Chameli to Tip Tip Parsa Pani, Katrina Kaif हर गाने में stunning ही दिखती है. Even off screen, she never misses out on giving a beauty enthusiast like me plenty of inspiration. So naturally, I had to do a makeup look inspired by her. Hi guys, मैं हूँ Smriti and I'm back with yet another celebrity inspired makeup look. पर उससे पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल BeBeautiful को सब्सक्राइब करें and also ring the bell icon ताकि आप ऐसे celebrity inspired makeup looks आपके फीड पे देखते रहें. मैंने ऑलरेडी मेरे स्किन और आईलिड्स को प्रेप कर लिया है. इस आई लुक के लिए आई एम यूजिंग द लैक्मे एब्सोल्यूट स्पॉटलाइट आई शैडो पैलेट इन स्टिलेटोस. सबसे पहले मैं एक ट्रांजिशन कलर लगाऊंगी एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस लाइट बेज कलर यूजिंग अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश. फिर मैं एक मीडियम टोन ब्राउन शेड लूंगी और उसे मैं मेरे सेंटर ऑफ द आईलिड से लेके आउटर आई एरिया पे स्मज करूंगी. इंश्योर करें that it has blended well with the transition color. अब इस सेम ब्राउन शेड को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी रिम करूंगी with the smudger brush. Now comes the star color of this eye look. For that, I'm using the sea green color. इसे मैं मेरे inner corners से लेके center of the eyelids तक dab करूंगी. Once you've patted the color, ensure करें to blend it well with the brown shade as well. As far as the sea green color goes, I recommend that you dab the color slightly past the inner corner area, especially on the lower area of the inner corner. आखिर में, I will dab this light champagne shade right on top of the inner corners of the eyes. इस eye look को मैं complete करूंगी with a few coats of mascara. आज मैं यूज कर रही हूँ the Lakme Iconic Volume Mascara in the shade Deep Black. Just wiggle and swipe. इस मस्कारा की फॉर्मुलेशन काफी लाइटवेट है और आप नोटिस करोगी कि कुछ ही स्वाइप्स में it will add tons of volume to your lashes. अब let's move on to the base. सबसे पहले मैं मेरे चेहरे पे imperfections को छुपाऊंगी with the Lakme Primer Plus Matte Concealer in the shade 24 Beige. इस कंसीलर की फॉर्मुलेशन काफी लाइटवेट है और इसमें प्राइमर भी है which ensures that it stays put for many hours. इसके बाद मैं यूज करूंगी the Lakme 9 to 5 Primer Plus Matte Perfect Cover Foundation in the shade Warm Beige. मैं इसे directly dot करूंगी all over the face and neck area and then I will blend it out with a beauty sponge. This matte foundation has a buildable coverage that delivers a smooth and even tone finish. इसके बाद I'm going to fill in my eyebrows using the Lakme Absolute Micro Brow Perfector in the shade Coffee. इसकी micro tip काफी helpful होती है in emulating natural brow hair. Fill in करने के बाद brush the hair back in place with a spoolie. अब मैं लगाऊंगी एक pinkish blush and for that I'm using the Lakme Absolute Face Stylist Blush Duo in the shade Coral. इस pigmented powder blush को मेरे cheeks पे dab करूंगी with a blush brush and then I'll blend it towards the temples. Now it's time to bring out the facial features. Katrina के look में I noticed that she has used a beautiful sun-kissed bronzer with a subtle highlighter. So आज मैं यूज कर रही हूँ the Lakme Absolute Highlighter in the shade Moonlit. इस पैन में आपको हाइलाइटर और ब्रॉन्जर दोनों मिलते हैं. Using a contouring brush, मैं इस ब्रॉन्जर साइड को मेरे cheek bones पे lightly drape करूंगी और फिर मैं हाइलाइटर साइड of the pan से अपने high points of the face को हाईलाइट करूंगी. और आखिर में इस लुक को मैं कंप्लीट करूंगी with a nude lipstick. मैं यूज कर रही हूँ the Lakme Absolute Precision Lip Paint in the shade Alluring Nude. ये एक velvety matte lipstick है that stays put for many hours. इस लिपस्टिक के ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा clear gloss and we're done. And now it's time to cue the beauty shots. So here we go.
गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप लुक? इस लुक को ट्राई करें एंड जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही सब्सक्राइब टू आवर बी ब्यूटीफुल चैनल, ring the bell icon to stay updated with more such videos, and I'll catch you in the next one.